Good morning, my dear all students. Hope you are all fine. आज मैं आप लोगों को फार्माकोपियस के इंट्रोडक्शंस के बारे में बताऊंगा. So here we are with the pharmacopoeia introductions. The word pharmacopoeia derives from two ancient Greek words, pharmakon and pia. Pharmakon and pia. Pharmakon means a drug. Pia to me means किसी चीज को बनाना है और यहाँ चीज क्या है? ड्रग. जब आप फार्मा की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी आर डीलिंग विद ड्रग. हम दवा से संबंधित काम की चीज के बारे में बात करते हैं. तो दवा को बनाने वाला, दवा को फॉर्मुलेट करने वाला क्या है? फार्माकोपिया. फार्माकोन एंड पिया. ठीक. तो फार्माकोपिया एक तरह से एक बुक है, बाइंडिंग कलेक्शंस which contains list of medicinal substances, list of crude drugs and formulas to make preparations from that particular formula. ये है फार्माकोपिया का definitions. Means pharmacopoeia is legally binding collections which is prepared by national or regional authorities. It contains a list of medicinal substances, crude drugs and formulas for making preparations from them. मीन्स जब आपसे कोई पूछता है कि फार्माकोपिया क्या है तो डेफिनेटली फार्माकोपिया संधि विच्छेद करते हैं तो फार्माकोपिया दो ग्रीक वर्ड से बना होता है, फार्माकोन एंड पिया. पिया मीन्स प्यार करना. जब हम किसी से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली वी डील्स विद formulations, we deal with preparations. Preparations of what? Formulation of what? Formulation of a drug. Pharmacopoeia. See, लीगल बाइंडिंग कलेक्शंस एक तरह की बुक है जो कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शंस ऑफ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस, लिस्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स, लिस्ट ऑफ their formulas, so that we will be able to make a formulations, to make a preparations of a drug. Here we are. What does the pharmacopoeia contains? Pharmacopoeia में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? Pharmacopoeia contains list of drugs and other related substances. क्या? List of drugs and other related substances, some excipients, ingredients, जो भी compositions है वो सारी चीज़ों का list of drugs and other related substances, different sources, their descriptions, test and analysis, formulas, how to prepare the drugs, their uses and utilization, doses and storage conditions. These are all the basic objectives which are contained in each and every pharmacopoeia. Means pharmacopoeia में list of drugs and other related substances, different sources from where they have been achieved,
descriptions about drugs, about related substances, test and analysis, how we will perform in a laboratory to maintain a good quality test, formulas to prepare the drug, uses and utilizations, and doses as well as storage conditions. स्टोरेज कंडीशंस का मतलब ये है कि ड्रग को either we have to keep in a normal room temperature, either we have to keep the drug in a cooled place in a refrigerator, whatever the conditions required, whatever the environmental storage conditions required, each and everything is mentioned in a pharmacopoeia. So here we are with Indian Pharmacopoeia. So Indian Pharmacopoeia Commissions IPC is an autonomous institution of the Ministry of Healthcare, Health and Family Welfare, which sets standards for all drugs that are manufactured, sold, and consumed in India. Means Indian Pharmacopoeia deals with a set of standards which are published under the title of Indian Pharmacopoeia. Certain standards for all the drugs which are manufactured, which are to be sold and consumed in India. These are all the objectives monitored under Indian Pharmacopoeia, and for that Indian Pharmacopoeia Commissions is established by an autonomous institutions by the Ministry of Health and Family Welfare of Government of India, जो मॉनिटर्स करती हैं कि ईच एंड एवरी सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द ड्रग्स जो भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ड्रग्स की सेलिंग हो रही है एंड कंजम्पशंस टुवर्ड्स द पब्लिक. Here we are with the history and additions. The process of publishing the first pharmacopoeia started in the year 1944 under the chairmanship of Colonel R.N. Chopra. 1948, Government of India appointed an India Pharmacopoeial Committee to prepare Pharmacopoeia of India. वहीं पे फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया की 1955 में पब्लिश हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.एन. घोष. बी.एन. घोष की चेयरमैनशिप में पहला एडिशन आया इन द ईयर 1955. डॉक्टर बी.एन. घोष, बी.एन. घोष ने जोश दिलाया. सेकेंड एडिशन 1966 में मुखर्जी के थ्रू. थर्ड एडिशन नित्यानंद चेयरमैन. फोर्थ एडिशन भी नित्यानंद चेयरमैन के अंडरशिप में. फिफ्थ एडिशन भी 2007 में आया डॉक्टर नित्यानंद चेयरमैन. फॉर द सिक्स्थ एंड सेवंथ एडिशंस आए. सेवंथ एडिशंस इन 2015. So, here we are with the British Pharmacopoeia. The British Pharmacopoeia is the national pharmacopoeia of the United Kingdom. UK का
जो बेसिक फार्माकोपिया था जिसे हम जानते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के नाम से, नेशनल फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम नोन एज ए ब्रिटिश फार्माकोपिया, मीन्स यूके की जो फार्माकोपिया मेंटेन की जाएंगी यूके के नेशंस में, वो क्या कहलाएंगी, ब्रिटिश फार्माकोपिया। British Pharmacopoeia is an important statutory component in the control of medicines। obvious सी बात है कि मेडिसिन को कंट्रोल करने का काम करेंगी फार्माकोपिया, चूँकि यूके रीजन्स को के लिए है तो डेफिनेटली ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश वालों के लिए टू कंट्रोल मेडिसिन्स। Along with the British National Formulary, BNF को बोलते हैं British National Formulary, it defines the UK's pharmaceuticals under standards, standards specify होंगी। When we talk about the history of British Pharmacopoeia, definitely 1864 में फर्स्ट एडिशन आया। Definitely, commissions was first appointed by General Medical Council (GMC) under the Medical Act 1858 to produce a British pharmacopoeia on a national basis. General Medical Council (GMC) under the Medical Act 1858 to produce a British pharmacopoeia on a national basis. 1907 में ब्रिटिश फार्माकोपिया सप्लीमेंट किया गया बाई ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। मीन्स बीपी की सप्लीमेंट्री आई कौन सी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, which give informations related to the drugs and other pharmaceutical substances। जब हम ब्रिटिश फार्माकोपियल की बात करते हैं तो इनके एडिशंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट कंप्राइजेज 6 वॉल्यूम्स, ईच कंटेन्स 3000 मोनोग्राफ्स फॉर ड्रग्स, सब्सटेंसेस, एक्सिपिएंट्स एंड फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस। Items used exclusively in veterinary medicines in the UK are included in the BP British Pharmacopoeia। एक बार फिर रिवाइज करेंगे हम तो फार्माकोपिया derived from two Greek words, ancient Greek words, pharmacopoeia, pharmakon, pia। pia means to make, to formulate। किसको फॉर्मुलेट करना है, फार्माकोन, ड्रग, ड्रग का फॉर्मुलेशन करना फार्माकोपिया, ड्रग को बनाना फार्माकोपिया, टू मेक ए ड्रग, फार्माकोन ड्रग, पिया मीन्स टू मेक। सो what do you mean by pharmacopoeia? Legal binding collections. It is regarded as a book which contains list of medicinal substances, crude drugs and formulas for making preparations from them। ठीक है, मीन्स फार्माकोपिया में क्या होता है, फार्माकोपिया कंटेन्स लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस, ड्रग सब्सटेंसेस के बारे में लिस्ट रहती है, क्रूड ड्रग्स के बारे में एक लिस्ट रहता है और उनका फार्मूलास, हाउ टू प्रिपेयर द ड्रग्स, ईच एंड एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड इन अ फार्माकोपिया। हियर वी आर, व्हाट डज द फार्माकोपिया कंटेन्स, ईच एंड एवरी फार्माकोपिया, either द ब्रिटिश फार्माकोपिया या फिर यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। इंडिया की बात करते हैं तो डेफिनेटली इंडियन फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया कंटेन्स व्हाट, फार्माकोपिया कंटेन्स लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस, सब ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस, different sources, descriptions, tests,
formulas for preparing actions, uses, doses, storage conditions. So means pharmacopoeia में list of drugs and other related substances, different sources of abilities ये मेंशन होता है। ड्रग्स की डिस्क्रिप्शंस के बारे में, उसके जो रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं उनके डिस्क्रिप्शंस मेंशन होते हैं, स्पेसिफाई होते हैं। उसके एसेस स्टडी कैसे करना है, उसकी एनालिसिस टेस्टिंग कैसे करनी है, दिस इज ऑल्सो टू बी contained in pharmacopoeia. Different formulas, how to prepare that particular formulations, that particular drug, ये मेंशन होता है, स्पेसिफाई होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स with their particular doses or storage conditions, how we will monitor the drug. These are all the factors which are mentioned, which are specified in each and every pharmacopoeia. Here we are with Indian Pharmacopoeia. Indian Pharmacopoeia में क्या होता है? All sets and standards for all drugs are specified that are to be manufactured, sold, and consumed in India. Regarding the health and family welfare, Indian Pharmacopoeia was established under the Indian Pharmacopoeial Commission's IPC. C is nothing but it's an autonomous institution gone by the Ministry of Health and Family Welfare. The basic objectives of Indian Pharmacopoeia is to set all the standards related to the drugs which are to be manufactured, which are to be sold, and which are to be consumed in India. मीन्स ड्रग के सारे स्टैंडर्ड्स, ऑल जो भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है रिलेटेड टू ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग। रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद डेफिनेटली वी हैव टू डील विद सेल। सेल होने के बाद डेफिनेटली वी हैव टू डील विद कंजम्पशन ऑफ ड्रग बाय द ह्यूमन बीइंग। तो each and every aspects are to be considered in Indian Pharmacopoeia, और ये set of standards of all drugs related to manufacturing, selling and consumptions, these are all sets specified, mentioned in Indian Pharmacopoeia. When we talk about the various histories and editions of Indian Pharmacopoeia, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1944 में फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। 1944 हमारे देश के आज़ाद होने के 3 साल पहले भाई R.N. चोपड़ा चेयरमैनशिप। 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमेटी टू प्रिपेयर द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इसके आज़ाद होने के बाद 1 साल बाद फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करने के लिए, आईपी बनाने के लिए इंडियन फार्माकोपियल कमेटी गठित की गई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1955 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.N. घोष। 55 में फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन जस्ट 11 साल बाद 1966 बाय डॉक्टर मुखर्जी चेयरमैन। थर्ड एडिशन भी 1985 में आया, डॉक्टर नित्यानंद चेयरमैन। सिमिलरली फोर्थ एडिशन डॉक्टर नित्यानंद चेयरमैन। फिफ्थ एडिशन भी 2007 में। फिर सिक्स्थ एडिशन, सेवन्थ एडिशन 2015 में।
हियर वी आर विद द ब्रिटिश फार्माकोपिया। डेफिनेटली ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करते हैं, मीन्स यूके की बात कर रहे हैं हम, यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम में भी जिस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन करने का है, तो वो सारी चीज़ें हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया में। ठीक, तो डेफिनेटली ब्रिटिश फार्माकोपिया is an important statutory component in the control of medicines in UK, United Kingdom. ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरीज में भी यूके की फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई होती हैं। अगर हम when we talk about या consider the history of British pharmacopoeia, तो फर्स्ट एडिशन बीपी की आई 1864 में पब्लिश हुआ है। To harmonize the pharmaceutical standards of UK, United Kingdom. A British Pharmacopoeia Commission was first appointed by the General Medical Council under the Medical Act 1958 to produce a British pharmacopoeia on a national basis. 1907 में British Pharmacopoeia produced a supplement by the British Pharmaceutical Codex। एक सप्लीमेंट लेके आए ब्रिटिश फार्माकोपिया की जगह ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। ये ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स का भी मेन ऑब्जेक्टिव था कि टू गिव एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्रग एंड अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। द बेसिक editions, current editions of British Pharmacopoeia comprises 6 volumes, जिसमें कि 3000 monographs for drug substances, excipients and formulated preparations होते हैं। हर monographs होते हैं related to drugs, excipients and other formulated preparations, items used exclusively in veterinary medicines in the UK. So these are all about, we have discussed about the pharmacopoeias. Here we have discussed about IP and BP, their histories and additions. Hope each one of you will understand easily about the pharmacopoeia. So with this, I stop today. Wish you all the best. Thank you.